इंडिया और कनाडा के बीच पिछले कुछ दिनों से टेंशन चल रही है। एज पर इंडिया, कनाडा इज सपोर्टिंग खालिस्तानी टेररिस्ट एंड एज पर कनाडा, इंडिया इज बिहाइंड द किलिंग ऑफ खालिस्तानी सिख लीडर निज्जर। लेकिन यहाँ तक बात पहुंची कैसे? कनाडा कनेडा कब बना? हाउ डिड इट बिकम द सेकंड होम टू द पंजाबीज? और जब इंडिया में सिख आर नॉट इनटू खालिस्तान एंड ऑल, तो कनाडा में खालिस्तान की इतनी आग क्यों लगी हुई है? इसके लिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। डू यू नो कनाडा में सबसे पहले सिख कब पहुंचे? 1897 में। यस, इट्स बीन मोर देन 125 इयर्स। उस समय कनाडा वाज आल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनी और जहां-जहां ब्रिटिश एम्पायर एक्सपैंड हुआ, वहां उनके साथ सिक्स सोल्जर्स पहुंचे। 1897 में कनाडा में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन थी, 60 इयर्स टू हर रूल। उस सेलिब्रेशन के लिए हांगकांग रेजिमेंट केम टू वैंकूवर, जिसमें चाइनीज, जापानीज और सिख सोल्जर्स थे। इनमें से केसर सिंह, जो कि ब्रिटिश आर्मी में रिसालदार मेजर थे, he became the first Sikh settler in Canada that year. फिर 1904 के अराउंड फर्स्ट वेव ऑफ सिख माइग्रेशन हैपेंड इन कनाडा। इसमें करीब 5000 सिख आए, मोस्टली फॉर लेबर जॉब्स इन द लॉगिंग इंडस्ट्री इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन ओंटारियो। ये लोग यहाँ सेटल होने की इंटेंशन से नहीं आए थे। They came for employment for 4 to 5 years. प्लान था ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स घर वापस लेके जाने का। इस समय इनको आसानी से काम तो मिल रहा था, लेकिन लोकल कैनेडियन पॉपुलेशन वाज नॉट हैप्पी बिकॉज ये लोग सस्ते में काम कर रहे थे और लोकल्स की जॉब्स जा रही थी। नॉट ओनली दिस, द सिख्स आल्सो फेस्ड रेशियल एंड कल्चरल प्रीजुडिसेस। जैसे जैसे और सिख यहाँ पहुंचे, सिचुएशन बद से बदतर होती गई। पब्लिक प्रेशर में कैनेडियन गवर्नमेंट केम अप विद स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस। अगर एशियन माइग्रेंट्स को कनाडा में एंट्री चाहिए, तो जेब में $200 कैश होना मैंडेटरी कर दिया गया, which was a lot of money at that time. वहीं यूरोपियन इमिग्रेंट्स needed just $25. इसके अलावा इंडियन इमिग्रेंट्स वर रिक्वायर्ड टू अराइव वाया अ कंटिन्यूअस जर्नी फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट, जो कि उस समय एयर ट्रैवल ना होने की वजह से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके चलते जहां ईयर 1907 में करीब 2500 लोग इंडिया से कनाडा पहुंचे, उसके बाद द नंबर केम डाउन टू ओनली अ फ्यू डजन एवरी ईयर। 1914 में एक जापानीज स्टीमशिप वैंकूवर पहुंची, जिसमें 375 पैसेंजर्स थे, मोस्टली सिख। इन सभी इमिग्रेंट्स को 2 महीने शिप पर डिटेन करके रखा गया, जिसके बाद इन्हें वापस भेज दिया गया। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने पर कनाडा रिलैक्स देयर इमिग्रेशन पॉलिसी। इसके 3 कारण थे। पहला, कनाडा अब यूएन का पार्ट हो गया था, तो इमिग्रेशन में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज नॉट पॉसिबल एनीमोर। दूसरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कनाडा स्टार्टेड टू एक्सपैंड इट्स इकोनॉमी, जिसके लिए इट रिक्वायर्ड लेबरर्स। और तीसरा, यूरोप से इमिग्रेशन बहुत कम हो गया था, सो द कैनेडियन गवर्नमेंट टर्न टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फॉर द इंपोर्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसी दौरान इंडिया में जब मुस्लिम्स के लिए दूसरा देश पाकिस्तान बनाने का प्लान हो रहा था, तो सम सिख्स आल्सो वांटेड इंडिपेंडेंट लैंड। उनका तर्क था कि मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल रहा है, तो हमें सिखिस्तान या खालिस्तान क्यों नहीं? सिखों की 500 साल पुरानी हिस्ट्री में दे हैव हैड देयर ओन किंगडम। दे फॉट अगेंस्ट मुगल रूल। उनके 6th गुरु ने मीरी पीरी फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया था, द आइडिया दैट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप आर मर्ज्ड। इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्टेड द आइडिया एंड इंस्टेड द सिख्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। उस समय द बाउंड्रीज ऑफ द पंजाब वर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द सिख्स वर नॉट इन द मेजॉरिटी। प्रेजेंट डे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वाज पार्ट ऑफ पंजाब, बट सिख्स परसिस्टेड। 1960s में एक बार फिर द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड फॉर सिख्स इमर्ज्ड, अ लैंड वेयर सिख्स आर इन मेजॉरिटी। द प्रोटेस्ट्स वर सक्सेसफुल। 1966 में पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। पंजाबी स्पीकिंग एरियाज वर मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब। अब पंजाब में सिख्स की पॉपुलेशन 58% थी। इसी दौरान 1967 में कैनेडियन गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन के लिए पॉइंट सिस्टम शुरू किया दैट मेड स्किल अलोन एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ नॉन डिपेंडेंट रिलेटिव्स इनटू द कंट्री एंड एलिमिनेटेड एनी प्रेफरेंसेस गिवन टू वन पर्टिकुलर रेस। Canada began to transition towards a policy of multiculturalism. As a direct result, within a few short years, the Indian population in Canada multiplied more than 20 times over. लेकिन 1980s में the notion of a Khalistan separate from India resurfaced, and that too in the form of large-scale militant uprising in Punjab. जो लोग इस militant movement का हिस्सा बने, they wanted an independent Sikh nation, not just a Sikh majority Indian state. Thousands of lives were lost on both sides in violent encounters between the Sikh militants and security forces. Canada में 1982 में Surjan Singh Gill established the Khalistan Government in Exile office in Vancouver, even issuing blue Khalistani passports in colorful currency. लेकिन local Sikhs से उसे खास support नहीं मिला. In fact, some of his activists displaying Khalistan posters were beaten up during the Baisakhi procession that year. फिर तलविंदर सिंह परमार, who was accused of killing 2 police officers in Punjab, he escaped to Canada. 1982 में India asked to extradite him back, but Prime Minister Pierre Trudeau, जो जस्टिन ट्रूडो के फादर थे, he declined. तब भी इंडियन पॉलिटिशियंस क्रिटिसाइज कनाडा जस्ट लाइक टुडे। 1984 में जब भिंडरनवाला गोल्डन टेंपल में जा घुसा, तो इन फेमस ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। आर्मी एंटर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस फॉर सिख्स एंड किल्ड भिंडरनवाला, आल्सो डैमेजिंग द अकाल तख्त, द होलीएस्ट सिख टेंपोरल सीट। सिख्स अराउंड द वर्ल्ड वर एनरेज्ड एज देयर होली प्लेस वाज वायलेटेड। कुछ महीने बाद ही इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर दिया, जिसके बाद एंटी सिख रायट्स हुए, जिसमें हजारों सिखों को मार दिया गया। फिर 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट बॉम्बिंग हुई,
331 people died. Talvinder Singh Parmar, who the Canadians refused to extradite in 82, was the mastermind behind it. 1990s तक इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट दबा दिया गया था. इस दौरान many Sikh activists fled India and went to Canada, where they were welcomed by a large Sikh community, many of whom had been sympathetic to the Khalistan idea. जहां इंडिया में खालिस्तानी movement finds little resonance in the Sikh population, it survives in parts of the Sikh diaspora in countries like Canada, the US and the UK. इसका कारण है कि जो लोग 1980s और 1990s में इंडिया छोड़कर इन देशों में गए, their families have grown up hearing stories about India being unjust to Sikhs. 1984 anti-Sikh riots का justice भी नहीं मिला. They remember it as dark times, and it is an intergenerational trauma. The youth there have either not seen today's reality in India or have seen it in a limited way. There is a lack of connection to the ground realities of today's Punjab, and when they see crackdowns like that on Amritpal Singh's organization and internet shutdowns, वो आग में घी का काम करता है. Their grievances have piled up over time, and the use of social media has amplified their messaging. इस समय कनाडा में 7.5 लाख से ज्यादा सिख हैं, constituting roughly 2.3% of Canada's total population. वहीं इंडिया में Sikhs constitute 1.72% of total Indian population. इंडिया के बाद सबसे ज्यादा Sikhs कनाडा में ही हैं, but not all Canadian Sikhs support the idea of Khalistan. एक छोटी minority है that is clinging to the past. Why this small minority remains significant is because they carry political clout, something that can influence a significant voting bloc in the country. There were 18 Sikh MPs in the Canadian Parliament in 2019, surpassing the 13 Sikh MPs in India. Although Trudeau has assured the Indian government that any acts of violence will be punished, he also has reassured Canadians that he respects free speech and the rights of Sikhs to speak and organize freely as long as they do not violate Canadian laws, which is one of the reasons Sikhs have been attracted to Canada. This upward trajectory of immigration continues today. हर साल around 30,000 Indian citizens become new permanent residents of Canada, जिसमें से 60% are Punjabis. What do you think about what's happening between India and Canada? क्या लगता है क्या होगा? Tell me in the comments below and follow India Times for more such informative videos.